Dear students, today I am giving you chapter 16. Some people never die. You have to understand the meaning of the name. Some people never die. कुछ लोग जो कभी नहीं मरते हैं, मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं हमारे दिलों में. ओके, हमारे आसपास उनका नाम हमेशा लिया जाता है. So we say that some people never die. Let us see. Some new words are there, and these are the words a little bit new as well as tough also. You have to remember the spellings and meaning both. Religious, dharmic, leaders, नेता, सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के लिए काम करते हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो इन्वेंशन करते हैं, मेमोरीज, यादें, चाइल्डहुड, बचपन, एंटायर, पूरा, डिजायर, इच्छा, encourage, प्रोत्साहन देना, encourage is the past tense, step mother, सौतेली माँ, Illinois is the name of the state of USA, Illinois, and lawyer, वकील, representatives, that is किसी भी जगह को प्रतिनिधि बन के जाना, like if you go to somewhere from the school, then you go as a representative, you represent the school. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज द विधानसभा जिसको बोलते हैं, जहाँ पे एमएलएस बैठते हैं, चीफ मिनिस्टर बैठते हैं एंड स्टेट का काम संभालते हैं. स्लेव, स्लेवरी, स्लेव मतलब गुलाम, स्लेवरी मतलब गुलामी. ओके, नाउ निग्रोज, दे आर द ब्लैकीज. अब साउथ अफ्रीका के लोगों को निग्रो बोलते हैं. अनपॉपुलर मीन्स नॉट पॉपुलर इन द पीपल. फेवर मीन्स सपोर्ट करना, फेवर्ड पास्ट टेंस. ब्रोक अवे, टूट गया. अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंसमेंट, you know the meaning, and announce and announced is the verb, announcement is noun. American Civil War, Civil War means the war happens, if it happens within the country. ठीक है, स्टेट वर्सेस स्टेट अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो उसको गृह युद्ध बोलते हैं. गृह युद्ध, सिविल वॉर, अपने ही कंट्री में लड़ाई हो जाना. ओके, दैट इज. एंड there was a war in America and it is very famous, American Civil War. Freedom, आज़ादी. Ban मतलब किसी चीज को बंद कर देना, रोक देना, बिल्कुल बैन कर देना. Now introduction of this chapter, as I have already said, in this chapter we are going to discuss about some names, some personalities who never die in our and they always remain in the world, like some names we keep on hearing on regular basis at homes, on TV, newspaper, in school celebrations also. We remember some people even after their death. मर जाते हैं फिर भी हम याद रखते हैं. Why? Because of their good deeds, अच्छे कर्मों के लिए. And they born great. Some people born great. Scientists, leaders, rulers, religious leaders, social worker in India like Mother Teresa, religious leaders like our Shankaracharya, rulers like Jawaharlal Nehru and Narendra Modi. These are rulers means the people who ruled the country earlier, like Akbar was there. Okay, and leaders like Jawaharlal Nehru, your Narendra Modi, and so many leaders were there in the world, and Martin Luther King. So they were the social leaders. Some are the political leaders, some are the social leaders. Scientists, you know the scientist in our country, who was the scientist? Abdul Kalam Azad. Okay, so these people work and bring improvement in the lives of other people. Okay, they work for the society, they work for the people, and they always live in our memories. हम उनको कभी नहीं भूल सकते हैं. They always live in our memories. Now, in this chapter, we will discuss about some people who never die for us. They are Abraham Lincoln, President of USA; Mahatma Gandhi, Father of the Nation, India; Martin Luther King, civil rights activist, USA; Mother Teresa, social worker, India, and she was from North Macedonia. So now
we will first discuss about the Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, he was the president of USA. He became president 2 times, okay, and he born in the year 1809 right now 2021, तो कितने साल पहले ये आप जोड़ लो, ठीक है. Born in the year 1809 in the very poor family in USA. He helped his parents in work in his childhood. The family was very poor, so he used to help his parents in work from the childhood. He never went to the school for complete 1 year in his life. Why? Because he has to work with the parents. बहुत गरीब फैमिली थी, पैसा नहीं था, so he used to help the parents and to earn the money. So he never went to the school. कभी जा ही नहीं पाए स्कूल. कभी भी जाते थे थोड़े समय के लिए जाते थे, आ जाते थे, because they didn't have money. He was encouraged by his stepmother. He was having सौतेली माँ, but that stepmother encouraged him a lot for his studies. पढ़ो करके. He studied by his own and became lawyer at the age of 22. ठीक है, फिर खुद कमाई करके किसी तरह पढ़ाई करके he became lawyer at the age of 22 and settled in the state of Illinois. Illinois is the state name of the state. वहाँ पे वो settle हो गए. He was elected to the Illinois House of Representatives. जैसे हमारा विधानसभा है उसी तरह वहाँ पे House of Representative है. तो Illinois state के House of Representative में at the age of 25 he was elected as a member. He became the member of that House of Representatives. So he became politically active. है ना, राजनीति में आए. Then there was a time there was slavery in USA. गुलामी होती थी वहां पे. लोगों को ही गुलाम बना के रखते थे, ठीक है. तो slavery was common in USA at that time. When Lincoln came into the politics, at that time there was slavery. गुलामी की प्रथा थी, okay. White people used to keep people from Africa as slaves. Africa, you know the continent, South Africa. अफ्रीका से ब्लैकीज को लेके आते थे लोग. वहाँ के लोगों को ब्लैक्स बोलते थे, एज वेल एज निग्रो भी बोलते हैं. दे वर कॉल्ड निग्रोज और ब्लैक्स. तो वहाँ से लेके आते थे व्हाइट पीपल, जो अंग्रेज जिसको हम बोलते हैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं, है ना. वो बाद में वो लोग लेके आते थे एंड अपना नौकर गुलाम बना के रखते थे. एंड दिस पीपल यूज्ड टू सोल्ड एंड बॉट इन द मार्केट. अफ्रीका में इतनी गरीबी थी कि लोगों को ही बेच दिया जाता था. तो दे वर सोल्ड एंड बॉट इन द मार्केट. वो खरीद के लेके आते थे एंड दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली बाय व्हाइट पीपल. बिल्कुल मतलब इतना काम कराना, गालियां देना, मारना और घर का सारा काम कराना. एंड काम कराओ, बट दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली. डोंट ट्रीट द पीपल बैडली. दे मेड टू वर्क फॉर लॉन्ग एंड देयर कंडीशन वॉज वेरी बैड. दिन रात काम कराते थे एंड पैसा भी नहीं देते थे. बहुत गरीबी में रहते थे वो ब्लैक पीपल. Lincoln was against of slavery, which made him unpopular in southern state of USA. If you see the USA's map, United States of America का मैप देखोगे आप, तो आपको ऊपर नीचे ऐसे नीचे की तरफ जाते हुए स्टेट दिखेंगे. तो जो नीचे साउथ की तरफ जो स्टेट्स थे ना, they were against Lincoln because Lincoln was against of slavery. उनको गुलाम पसंद नहीं थे, वो गुलामी हटाना चाहते थे कंट्री से, okay. And because of that he became very unpopular. लोगों ने पसंद करना छोड़ दिया उनको southern states of USA में, okay. Now this is the picture of Abraham Lincoln. Abraham Lincoln as the president of USA, when he was elected in 1860, in the year 1860 Lincoln was elected as president of USA, okay. इनको ये president बने USA के. After it many states of South broke away. जब ये बने, because southern states they want the slavery. उनको चाहिए था, गुलाम उनको चाहिए थे. But Lincoln was against of slavery. उनको बिल्कुल पसंद नहीं था slavery. तो बहुत सारे स्टेट जो थे ना वो यूएसए से टूटने लगे. एंड दे अनाउंस टू मेक सेपरेट नेशन. दूसरे अलग कंट्री बनाएंगे हम. क्यों? क्योंकि उनको गुलाम चाहिए था. गुलामों को परेशान करना, गुलाम रखने की आदत थी उनको. तो उन्होंने अलग नेशन बनाएंगे करके अनाउंस कर दिया. Then there was a civil war for 4 years. 4 years गृह युद्ध चला. गृह युद्ध बोलते हैं, अंदर ही अंदर लड़ाई चलती रही वहां पे. Because of only to have the slaves in their life, मतलब गुलामों को रखने के लिए, okay. Then war won by the northern state.
states backed by Lincoln and US remained a united country. लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स जो थे वो लिंकन के साथ थे और लिंकन उन्होंने ही ये वॉर जीता 4 साल के बाद एंड यूएसए फिर टूटा नहीं. दे रिमेन यूएसए रिमेन्ड अ यूनाइटेड कंट्री. नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट एक ही साथ रहे. लिंकन अनाउंस्ड फ्रीडम फॉर 3 मिलियन स्लेव्स इन द यूएसए. बताओ 30 लाख लोग गुलाम थे अफ्रीका से लाए हुए. ब्लैक्स निग्रोज 30 लाख किसको बोलते हैं. 30 lakhs people were slave in the USA and Lincoln announced freedom for them. उनको आजाद करवाया लोगों से. After that a law was given to ban slavery. फिर गुलामी बंद करने के लिए कानून बनाया गया, लॉ बनाया गया कि नहीं अब सब बंद करो, बहुत हो गया. Lincoln was elected as president second time. दोबारा वो प्रेसिडेंट बने because he was supported by the blackists again also and he became the president again. But he tried to maintain peace and unity, शांति और मतलब एकता between the northern and southern states and made plans to remove differences. जो northern and southern state के लोगों के बीच में differences थे उनको हटाने के लिए बहुत सारे प्लान बनाए उन्होंने और peace और unity बना के रखने की कोशिश की. But he was shot dead by a supporter of northern states. But उनको मार दिया गया. क्यों? क्योंकि southern state के supporter उनको जिनको गुलाम रखना पसंद था उनको ये प्रेसिडेंट पसंद नहीं आया तो उन्होंने उनको गोली मार के अब्राहम लिंकन को मार दिया गया. ओके, सो ही वाज in the heart of the people of USA and we all know about Abraham Lincoln and his deeds. So he is very, very popular president. Okay, thank you. The chapter is tough. You have to read it again and again and listen it again and again. Learn the words and the meanings also. Write down. Okay, thank you.